Hello everyone, welcome back. I am here with one more new topic of the geography, that is to study about our continent, that is Africa. So at the end of the lecture you will be well aware of the facts of Africa. Example, latitudes in Africa, plus rivers in Africa, mountains in Africa, tribes of Africa, climate of Africa. So once we will be done with this particular lecture, you will be aware of all these particular facts. So let's start with this particular lecture. So as you are seeing in the screen, we have the map of the Africa. Now we will see some of the latitudes. First of all, we'll see the condition and latitudes, longitudes, where it is basically placed. Okay. So here we are saying, if we see here, it is between 40 or 50. This is the point. Okay. So, and this, the north point, this south point here. So the first foremost point is, this is the 0 degree longitude. This is 0 degree latitude. So just see, these both, these 0 degree means 0 degree longitude, 0 degree latitude, both are passing through our Africa. Means this is the continent which lies in all the four hemisphere. Then second point, see here we have somewhere we will have the Tropic of Cancer in 20 to 30 degree in between. Then in 22 30 degree here we'll be having Tropic of Capricorn. So see, both of these latitudes also, Tropic of Capricorn in southern hemisphere, Tropic of Cancer in our northern hemisphere. So all the three main latitudes which we use to study, that is 0 degree latitude equator, 23.5 degree latitude, that is Tropic of Cancer, and same 23.5 south, it is Tropic of Capricorn. All these three latitudes are passing from here, and the 0 degree longitude is also passing from our Africa. So Africa is the second largest continent in the area, which covers 6% of the total Earth surface area plus 20.4% of its total land area. Now, which is the first continent is Asia. Okay, so it is located between the latitudes. Now, we'll see the whole width and the length latitude. So it is 37 degree north, 35 degrees south. North latitude is 37 degree north, south is 35 degree south, and longitudes कौन से हैं इसमें 50 degree east and 20 degree west. These are the particular. So the point is, if this is our Africa, so here will be a 37 degree north, done, and here will be a 35 degree south. These are the latitudes, and when it comes to the longitudes, it is 50 degree east, and here we will be having a 20 degree west. So these are the latitudes and longitudes in between which our Africa falls. So Africa is the only continent from where all, that is equator, Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer passes, as we have seen also. Greenwich Meridian passes through the western part of Africa. It is the only continent where the 0 degree latitude meets and the 0 degree longitude. These lines meets at the Gulf of Guinea. Okay, so where the 0 degree latitude and 0 degree longitude meet, this particular point is Gulf of Guinea. Okay, so the only continent which lies in all the four hemispheres, as we have seen in the map also. Now as we have seen the latitudes, now the next point कि इसके आसपास क्या है. If we have seen the map, now see, if you are aware with all the particular, देखो north में क्या है इसमें, here we have our Mediterranean Sea. जिनको maps, if you are okay with maps, you are good with maps, then क्या होगा आपको, you will be very much aware of all these particular facts, these seas. So here it is Mediterranean Sea. Then come this side, here it is Red Sea. Here we have a Gulf of Aden. Then Indian Ocean on the east side. यहाँ पे भी Indian Ocean here. On the west side we have a South Atlantic Ocean, and here we have a North Atlantic Ocean. So the point is, we start with the Mediterranean Sea, then come to the Red Sea. Red Sea के साथ here's the Gulf of Aden. Then we'll start with the Indian Ocean. East side में Indian Ocean है. Then south में भी यहाँ पे Indian Ocean. Then when we go to the west side, it is the South Atlantic Ocean and the North Atlantic Ocean. So these are the facts which you know कि कौन-कौन से oceans ने इनको घेरा हुआ है, कि इसके आसपास कौन से oceans क्या हमारे west में है, क्या जब जैसे north में we have the Mediterranean Sea, साथ में क्या है, Europe also is there.
Okay, here it is the Strait of Gibraltar. This, it is not visible, but this is the Strait of Gibraltar. Okay, now the next is some facts. Which is the largest? इसमें total कितनी countries है in Africa? We have the 54 sovereign states. Then largest is Algeria, smallest is Seychelles, and most populated is Nigeria. So just take care of this particular fact. Total कितने हैं? 54. Largest is Algeria, smallest is Seychelles, and most populous one is Nigeria. Now we will start with the particular features of the Africa, that is the physical features of Africa. Then, so the first particular point which we come across, that हम सबको जब हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, that is are the Sahara desert of the Africa. See, यहाँ पे हमने क्या देखा ऊपर, there is the Mediterranean Sea. तो थोड़ा थोड़ा देखो यहाँ पे fertile land है, and after then we have this whole of our Sahara desert. This is our Sahara desert. So the world's largest hot desert. Deserts are of two types, that is hot desert and cold desert. Cold desert में सबसे बड़े कौन से? One are Antarctica and second is Arctic. तो world's largest hot desert है, इसलिए the third largest desert है, because first and second are Antarctica and Arctic. But when it comes to the hot desert, the largest one is our Sahara only. Now see these particular countries in this: Egypt, Libya, Algeria, Mauritania, Western Sahara, Mali, Niger, Chad, Sudan. So these are the particular countries which come under our Sahara desert. Now as we come downwards, first region we see is our Sahara desert. The second, Sahara desert के नीचे ही जो area, that is the, because desert means totally arid area, इसमें कोई vegetation नहीं होगी, कुछ नहीं होगा. But the Sahel region is basically a semi-arid land. That forms a transition zone between the Sahara and the savannas. मतलब पहले हमारा ऊपर है यहाँ पे Sahara, then we are having a Sahel, and then down we will have our grasslands which are called savanna. So Sahel is a transitioning area, purely arid area से नीचे वो जाएगा किसमें? हमारे grassland area में. So it is made up of a flat barren plains that stretch roughly 5400 kilometers. Sahel's fertile land is rapidly becoming desert as a result of drought, deforestation and intensive agriculture. इस particular point को हम क्या बोलते हैं? When it is deforestation है, intensive agriculture, overgrazing. So there is one word, just take care of that, that is desertification. Means our Sahel region is undergoing a desertification. So Sahel region क्या है? हमने सहारा ऊपर देख लिया, that is a pure desert. But उसके नीचे क्या है? हमारा Sahel region. Sahel region, this. See, this is a Sahara desert. So इसके नीचे ही क्या आ जाएगा? हमारा Sahel region. जिसमें क्या है हमारा? Basically, this is a transitioning zone between the desert and the grasslands. Plus, it is a semi-arid transitioning zone. So you have to take care of this particular points of the Sahel region. Now the most topic is East African Rift Valley. So आप सबने वैसे भी कभी करंट अफेयर्स में या नॉर्मली पढ़ा होगा कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में. So ये जो भी आपको इस पूरे डायग्राम में this ये वाई शेप में जो दिख रहा है, this is whole our रिफ्ट वैली. वो रिफ्ट वैली क्या है कि दो प्लेट्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है. जो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, दैट इज द खाई जो है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली. तो द पॉइंट इज, बोला जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हम कभी व्हेन वी विल स्टडी द टेक्टोनिक प्लेट्स उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स, तो कैसे रिफ्ट वैली बनती है. बट यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट्स की वजह से, मूवमेंट की वजह से वी आर हैविंग द रिफ्ट वैली. सो जो रिफ्ट वैली है, सी हियर इज अ Red Sea, Gulf of Aden. Okay, when we move downwards, so we will come across, this is our Ethiopian highlands. Okay, these are our Ethiopian highlands, and when come, this is our Lake Victoria. Lake Victoria के पास से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, that is the west part and then it is east part. Then it will come downside and here it will come to the Lake Malawi. Here we are having Lake Malawi, and downwards we will be having our
Mozambique. So the point is, Eastern African Rift Valley is a series of contiguous geographic trenches. What is trenches? जो हम normal language में बोलते हैं खाई. Then the Rift Valley begins from the Red Sea and extends through Ethiopian highlands to Lake Victoria, where it subdivides into east and west. Segments continue southward through Lake Malawi to मोजाम्बिक. सो कहां से चली हमारी? रेड सी से चली, इथियोपियन हाईलैंड्स में आई, इथियोपियन हाईलैंड से लेक विक्टोरिया के पास से स्प्लिट होगी ईस्ट और वेस्ट में, एंड उसके नीचे लेक मलावी, एंड देन कम टू द मोजाम्बिक. ओके, नाउ हमने क्या पढ़ा? सहारा. सहारा के बाद हमने नेक्स्ट फीचर पढ़ा साहेल. अब उसके नीचे वाला जो फीचर है दैट इज आर सवाना ग्रासलैंड्स. सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज, ये हमारा जो बीच में दिस पर्टिकुलर एंड दिस ऑरेंज सा कलर में, दिस इज आर साहेल रीजन. Yellow we are having our Sahara, and this green is our Savannah. This black is our Rift Valley. And see one more thing here, this which is showing is Serengeti. Basically, this is a particular plain area we'll study here also. So, savanna grasslands are tropical grasslands, cover almost half of Africa. The grasslands make up of a center, mainly they lie between the central Africa, beginning south of the Sahara and the Sahel and ending north of the continent southern tip. Means यहाँ से कभी start हुए Sahel region के नीचे से और कहाँ पे खत्म हो रही है? southern tip से ऊपर यहाँ पे ये खत्म होंगे. Now the next is Serengeti is a vast undulating plain that stretches 30,000 square kilometers. It is home to one of the continent's highest concentration of large mammal species, including lions, zebras, giraffes, and elephants. Means here are savannas. Savannas के बीच में जो ये area है, this is our Serengeti. And Serengeti basically क्या है? This is a undulating plain. एक plain area है जो wide stretched है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिल जाए? This is the highest area which is known for the mammal species, animals के लिए. Done. Now here come our second this particular one more feature, which is a famous feature that you also know, African Great Lakes. Now the point is, हमें याद भी नहीं होते हैं. These are the 7 Great Lakes of the Africa. So देखो, इसको याद करने के लिए आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं. But the one which I used to see or which I have seen from somewhere also, it is क्वीन विक्टोरिया. यू ऑल नो क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया टांगे में, यू नो व्हाट इज टांगे? दैट इज कार्ड, जो पहले के टाइम में सामान इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज. टांगे पे माल, माल इज मटेरियल, जो उसके ऊपर टांगे के ऊपर जो रखा हुआ है दैट इज कॉल्ड माल इन पर्टिकुलर हिंदी, है ना. माल जा रहा था और हम सब ताके हुए थे. यू नो हिंदी में देयर इज वन वर्ड ताके, देखना. ठीक है. सो क्वीन विक्टोरिया के टांगे पर माल जा रहा था और हम सब ताके. ताके की स्पेलिंग अगर हम हिंदी में लिखें ऐसे लिखते हैं. सो दिफ यू हैव टू सी एंड सो यू कैन टेक, और ऐसे कैसे भी, बट याद करने के लिए नो हैव टू मेक ट्रिक्स. सो तुर्काना, ए लेक एल्बर्ट, लेक किवू एंड लेक एडवर्ड. सो क्वीन विक्टोरिया का टांगे पर माल जा रहा था और हम सब ताके हुए थे. सो नाउ दिस इज द पर्टिकुलर टू लर्न, बट यहाँ पे चीज ऐसी नहीं है. देयर इज लेक एल्बर्ट ऊपर है, देन लेक एडवर्ड. सी दीज आर द लेक्स. लेक किवू इज हियर, लेक विक्टोरिया इन सेंटर वी हैव सीन. यहाँ से रिफ्ट वैली डिवाइड भी होती है. लेक तंगानिका, लेक रुकावा and here Lake Turkana. So these are Lake Malawi is at the lowest point. Okay, so this is all about the African Great Lake. So Lake Victoria is the largest lake in Africa. It is the southern source of the Nile River. And the Nile River you all know is the longest river of the world. Now next is Central African Rainforest. We have seen some. So this particular region is also on the a rainforest area. So 80% of Africa's rainforest is concentrated in Central Africa. As we have seen, जब हमने savanna देखा, उसमें भी it was in Central Africa. Most of the native rainforest has been destroyed by development of agriculture and forestry. इनको क्या बोला जाता है? Jewels of the earth or world's largest family. Sometimes you get a direct question कि jewels of the earth या world's largest family किस particular area को बोला जाता है. So you have to take care of it as the Central African rainforest. Now we have studied one desert, that was the Sahara Desert. Now two more deserts we know, that is the see on the diagram, sorry in this map, it's a Kalahari Desert and Namib Desert. Namib Desert is a particularly a coastal desert. So Kalahari Desert location क्या है इसका? Botswana, Namibia in the South Africa, and this is called the land of San people. San people is hunters, and one river that is
flow from here is the Orange River and it is famous for diamond mining. ओके सो कालाहारी के साथ आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने कि कहाँ पे है. सैंड पीपल मींस हंटर्स के लिए इसको बोला जाता है. ऑरेंज रिवर यहाँ से फ्लो होती है एंड द वन मोर थिंग इज द डायमंड माइनिंग के लिए ये फेमस है. नामिब डेजर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड और इसको क्या बोलेंगे कोस्टल डेजर्ट इन सर्दर्न अफ्रीका स्ट्रेचेस यहाँ से एंड देयर इज वन नेशनल पार्क हियर दिस इज नामिब नॉकलुफ्त नेशनल पार्क प्रेजेंट हियर. सो सी दिस इज आवर Namib desert, this is our Kalahari desert. Okay, now rivers in Africa. Now you are seeing the longest river, that is the Nile river. See one more thing, यहाँ से आई white river, ये आई blue river and this finally forms our Nile river. Here we are having our Suez Canal. Okay, now this is our Limpopo river. ये रही हमारी ऑरेंज रिवर. कहां पड़ी थी हमने ऑरेंज रिवर? इट वाज कालाहारी डेजर्ट के साथ. देन जाम्बेजी रिवर, कॉन्गो रिवर. याद रखना कॉन्गो रिवर इज द रिवर विच इज एसोसिएटेड विद आवर tropical rainforest area या grasslands वाला area. So this is particular thing you have to take care. Then here we have these are important rivers. Yes, let's see. Okay, so Nile हमने कैसे पढ़ा कि व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन. व्हाइट नाइल कहाँ पे? नियर लेक विक्टोरिया. और ब्लू लाइन फ्रॉम लेक टाना. इसको जब मिलके क्या बना देंगे? हमारा नाइल रिवर. तो सोर्स क्या आया? कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाइट नाइल एंड ब्लू लाइन. एंड व्हेन इट कम्स टू द माउथ की फाइनली जाके ड्रेन कहाँ होती है? दैट इज आर इन द मेडिटेरियन सी. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, कवर्स 11 कंट्रीज. बेसिन कवर्स 11 कंट्रीज. कॉन्गो और जायरे रिवर. सोर्स क्या है इसका? कॉन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूलाल्बा and Luapula rivers. Now you have to take care of all these sources plus mouth. These are the 2 points important. Second longest African river and this is the particular river which cuts the equator twice. See, this is the Congo river. तो एक बार यहाँ काटेगी and the same particular point यहाँ पर काटेगी. So this is the particular river which cuts the our equator twice. Now these are the more rivers. River Niger, source Guinea Islands and mouth क्या है? Gulf of Guinea, Atlantic Ocean. Third longest river system in Africa and principal river in the West Africa. So basically it flows in where it is in the Western African part. Then river Zambia, इसका जो source है that is northwest Zambia and mouth is our Indian Ocean. See, the Victoria Falls and Lake Kariba located on this river. Victoria Falls are very very famous falls. So if somewhere you get a question कि Victoria Falls कौन सी river के ऊपर है, then it is the river Zambia. River Orange कहाँ पड़ी थी हमने? Kalahari Desert. Source क्या है? Drakensberg Mountains. Mouth क्या है? Atlantic Ocean. River Limpopo, source South Africa and mouth Indian Ocean. So all the point is, अगर आपको ये particular map अच्छे से याद है, see this is the Limpopo River. अगर आपको ये सारे मैप्स अच्छा, ये पर्टिकुलर मैप आपको याद है, so you will not get confused some with the particular things. Okay. Now these are the some of the mountains which and plateaus region which in the Africa. Here is the Atlas Mountain located on the northwestern coast with the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. This question I know. ओके एंड इथियोपियन हाईलैंड्स हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने रिफ्ट वैली वाला पोर्शन पढ़ा था कि जब वो वाई बन रहा था. सो दिस पर्टिकुलर एरिया वाज इथियोपियन हाईलैंड्स. सो दिस इज अ प्लेट्यू ऑफ अ वॉल्केनिक रीजन. Mount Kilimanjaro is we studied with the extinct volcanic cone. Okay, they are dormant है, active volcano होता है, extinct volcano. So Kilimanjaro is with the extinct volcano. Okay, जो वापस कभी erupt नहीं होगा या फिर बहुत ही सालों से वो erupt नहीं हुआ. Mount Cameroon, only active volcano in the Africa. So you have to take care of this particular. अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका में कौन सा active volcano, that is our mountain Cameroon. And Tibasti Massif, this is a desert mountains of a volcanic origin in northern hand. Agar Mountains, desert mountain, कहाँ पे है ये? Algeria. Algeria was the biggest country in the Africa. And Mount Sinai, mountain in Sinai Peninsula of Egypt. Okay, so these are the particular mountains which is important. Next is the climatic zones of the Africa. You also know, देखो 0 डिग्री है. अफ्रीका की एक खास बात बताते हैं. If this is our Africa, हमने क्या देखा? यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. सिमिलरली यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? डेजर्ट होगा. तो यहाँ पर भी क्या होगा? डेजर्ट. और यहाँ कहीं हमने पढ़े ग्रासलैंड्स है, तो नीचे भी ग्रासलैंड्स ही होंगे. देन
सो द पॉइंट इज एज लैटिट्यूड्स का जो कंपोजिशन है सेम है, इक्वेटर उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी जो वेजिटेशन है ये ऊपर नीचे सेम मिलती है हमें. सो क्या क्या मिलेगा हमें? रेन फॉरेस्ट कंप्लीट, वी हैव क्लाइमेट वी हैव डिस्कस्ड, ग्रासलैंड्स, मेडिटेरियन हॉट समर बिकॉज यहाँ पे सी के साथ क्लाइमेट भी है, एंड देन हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, देन ट्रॉपिकल वेट ड्राई सवाना क्लाइमेट. व्हेन वी सी द वर्ल्ड क्लाइमेट, उसमें हम ये सब कवर करते हैं. दैट इज व्हाट इज द मेडिटेरियन क्लाइमेट, व्हाट इज ट्रॉपिकल वेट ड्राई सवाना क्लाइमेट. सो विल बी वेरी वेरी मच क्लियर. तो हियर वी गेट अ Mediterranean hot summer and the tropical wet dry savanna climates. Now here are the minerals. So in this particular map you can see a mineral. See, we are getting cold, we are getting coffee, then diamonds, then crude oil, copper, aluminium, again coffee here, some is cocoa beans, fish, iron, petroleum and natural gas, crude oil. So here are these particular minerals which you can see. Here we are having some grains also. Okay, so these are the, Africa is famous for diamonds. So see, diamonds. Okay, and gold, diamonds and gold. So देखो ज़्यादा if you see this particular, तो pink portion is all about the diamonds and gold. Okay, नेक्स्ट इज आर एग्रीकल्चर. सो प्रायोरिटी एग्रीकल्चर कम्युनिटी वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम ऊपर देखें हेयर वी हैविंग व्हीट एंड हॉर्टिकल्चर इन नॉर्थ अफ्रीका, sorghum, millet, cowpea and livestock in the Sahel region because it was a Sahel region was a semi-arid region. Rice in the West Africa, then maize, soybean, dairy and livestock across the Guinea savanna, then tree crops like cocoa, coffee, cashew and oil, palm oil, horticulture and fish farming across all the Africa. ये पूरे के पूरे अफ्रीका में. cassava in the humid and subhumid zone. So this is the particularly agriculture अगर जो breakthrough हम देखें, so this is of the Africa. Now the last point is about the some tribes in Africa. Sometimes you get a questions on the tribes, sometimes you need it and while you mentioning in the mains answer question. So this is Zulu, South Africa, Xhosa, कारो, हमार, योरूबा, हिम्बा, सान बुशमैन, संबुरु, मसाई. ये सबको पता होती है मसाई, सबको पता है बट अदर एंड हेड्जाबे. वंस मोर जुलू, जोसा, कारो, हमार, योरूबा, हिम्बा, सान बुशमैन, संबुरु, मसाई and the Hadzabe. So these are the particular tribes which are associated with our Africa. Thank you so much. I just hope you like this particular lecture and you are clear with all the facts and figures of our Africa.